समस्त को नमस्कार पिलामाने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनाऊँ आम आउ एक भिडियो तो पिलामाने आपण माने समस्ते फास्ट सेमिस्टर क्लास आमर करूछंती जो मानकु भी आमर हैंडरिटेन नोट्स भल लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूछंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु आपनकर हैंडरिटेन नोट्स प्राइस आपन को 5टा बही आमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु आउ क्लास आम क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपन जुलाई मास जो एग्जाम रोची सिथि समस्त की ऑल द बेस्ट आउ जहाँ भी आपन डाउट रहइबो किछि भी आपन क्वेश्चन रहउची आपण हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे तो चलंतु आम क्लास आरंभ करिबा एंड वेलकम टू साइक्रिष्णा इंस्टीट्यूट एंड श्री इंस्टीट्यूशन आज आम पढ़ा तुम फिजिकल साइंस रो 4th यूनिट जोटा कि तुम रही कौन ना अप्रोचेस मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एथिरे तुम फर्स्ट रही कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल साइंस दैट मीन्स एथिरे तुम कौन अप्रोचेस आउ मेथड्स जो थे कि गोटे स्टूडेंट केमिति पाठ पढ़ारे कौन हो पार पार्टिसिपेट करा तुम भितर रहिबो तो तुम को मेथड्स रे को अप्रोचेस रे पाठ पढ़ेले गोटे लर्नर से लर्नर फ्रेंडली हम आउ गोटे लर्नर भी से पार्टिसिपेट कर लर्नर भी से कौन इंटरप्रिट कर ठीक अच्छे तो फर्स्ट द वर्ड मेथड इज अ लैटिन मीन्स मोड और वे द मेथड रो लैटिन वर्ड रो मीनिंग होची मोड और वे तो को वे रे तुम माने ए मेथड और अप्रोच इज अ टूल or a instrument in the hand of a teacher to present the content successfully, systematically and satisfactory. कौन कौन गोटे तुमर सक्सेसफुली सिस्टमेटिकली एंड satisfactory है गोटे टीचर ता कंटेंट को सिस्टमेटिकली तुमको पढ़ाई पार मेथड को यूज कर सक्सेसफुली कंप्लीट कर पार आउटा गोटे satisfactory हम बुझीगला Method or approaches is further explained as the procedure for arriving at destination or goal attain desired objective माने मेथड होची गोटे मेथड बा गोटे माने अप्रोच होची गोटे प्रोसेस जो थे कि गोटे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करा जाए जोटा कि तुमको तुम गोटे स्टूडेंट रो ता डेस्टिनेशन पाइबारे हेल्प करे से जो ऑब्जेक्टिव चाहू थाए से ऑब्जेक्टिव बा से गोल को अचीव करिबारे ताकू कौन करे हेल्प करे देन तुम आसला नीड एंड सिग्निफिकेंट वर्किंग आउट ए बेटर टीचिंग स्ट्राटेजी है तार कौन तार नीड कौन अच्छी ना गोटे बेटर टीचिंग स्ट्राटेजी पाई कि एटा काम करे एनश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम concrete to abstract provide knowledge at understanding level to create interest attitude and mathematical spirit बुझीगला प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग रो प्रिंसिपल कौन टीचिंग स्ट्राटेजीज आर डिपेंडेंट ऑन नोन और अनोन तो कौन ना फर्स्ट हो तुम नोन टू अनोन फास्ट तुम जानिबो अजना कथा तापरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है धीरे 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 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आड़ को जीव इजी टू डिफिकल्ट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बुझीगला गोटे टीचिंग रो प्रिंसिपल होची जानिथिबा जिनस प्रथमे जानिबा तापरे आस्ते आस्ते न जानिथिबा जिनस को जीवा तापरे सिंपल जिनस रु कॉम्प्लेक्स जिनस को जीवा बुझी पारलो कि नहीं तापरे होची तमरो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग सुइटेबल टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट माने तमरो टीचिंगटा सबू लेवल स्टूडेंट को टच कर पारथिबा दरकार इंटरएक्टिव हवा दरकार रिलेटेड टू लाइफ हवा दरकार मोटिवेशन टू स्टूडेंट हवा दरकार अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट छुआ मान को अपॉर्चुनिटी दबा दरकार तांको पार्टिसिपेट कराइबा दरकार गाइडेंस एटा होची गोटे गुड टीचिंग रो एतिक सबू कैरेक्टरिस्टिक्स there are two types of approaches then तमरा आसीगला approaches inductive गोटे deductive गोटे inductive approaches कौन in the inductive approach the concept is derived after electing a number of example from pupil कौन कहला ना inductive approach टा होची गोटे concept जोटा कि
नंबर ऑफ एग्जाम्पल गोटे स्टूडेंट रु डिफरेंट टाइप रो बुझेबा माने डिफरेंट वे रे बुझेबा गोटे स्टूडेंट को एटा होची तमरो इंडक्टिव अप्रोच इट इज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल एटा गोटे पर्टिकुलर टू जनरल प्रोसेस को फॉलो करे in the teaching of physical science we start from everyday observation argue from particular essay to general conclusion and arrive at law or principle or theories ହେଲା ବୁଝିହେଲା तार प्रिंसिपल कौन हम ना फास्ट तुमको एग्जाम्पल दिहब जेनरालाइजेसन कर बुझेवाई तापर तुमको कही टीचिंग रो तुम मेथड्स नोन टू अनोन पर्टिकुलर टू जनरल कंक्रीट टू abstract एतिक हूँ तुम इंडक्टिव अप्रोच on heating iron example जेमती on heating iron copper aluminum expands all are metal so on heating metal expands तुमको धर गोटे टीचर कहला जे ऑन हीटिंग मेटल्स एक्सपांड तो तुमको मेटल रो एग्जांपल दब लाइक आयरन लाइक एल्युमिनियम लाइक कॉपर तुमको सब एक्सपांड करिकरी देखेबा तो तमे तमर सेठी कॉन्सेप्टटा कंक्रीट टू abstract हे जिवो माने तुम मुंडर सेटा भर्ती हेकी रहइबो abstract हे जिवो तुम मुंडर सेटा ठीक अछि स्टेप टू इंडक्टिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग केमिति इंडक्टिव अप्रोच रो प्रॉब्लम सॉल्विंग हेई पारिबो फास्ट तुम सेंसिंग द प्रोब्लेम फास्ट प्रोब्लेम को सेंस करिवो एनालिसिस करिवो डाटा कलेक्ट करिवो तापरे सॉल्यूशन बाहर करिया पे फ्रेमिंग करिवो ऑर्गेनाइजिंग द डाटा एलिमिनेशन एंड वेरिफिकेशन एतिक हूँ तुम इंडक्टिव अप्रोच रे प्रॉब्लम सॉल्विंग रो प्रोसेस देन तुम हूँ डिडक्टिव अप्रोचटा तुम जहाँ इंडक्टिव अप्रोच रे पढ़िल तार अपोजिटटा हूँ डिडक्टिव अप्रोच ठीक अच्छे it is the opposite to inductive approach it is from general to particular सेटा particular to general होतिला generalize करा होतिला एटा generalize को particular करा हबो हैला मन रखि देबो ए देनसटा इंपोर्टेंट डेटा हेटा थिला इंडक्टिव रे तमरो कोन थिला पर्टिकुलर टू जनरल एटा होची तमरो जनरल टू पर्टिकुलर तो इधर प्रिंसिपल होची कोन ना प्रिंसिपल टू एग्जांपल्स अननोन टू नोन जहाँ तार सब थिला सबु एठी उल्टा सेठी नोन टू अननोन थिला एठी अननोन टू नोन जनरल टू पर्टिकुलर abstract टू नोन थिंग तमे एठी कोन करथिलो कंक्रीट रू abstract करथिलो एटा होची abstract टू नोन थिंग एसिड एग्जांपल कोन ना एसिड चेंजेस ब्लू litmus as red and base changes red litmus as blue हैला एटा होस तमरो एग्जांपल तापर डिडक्टिव अप्रोच रो कोन कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स रहला अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिव्यूइंग ड्राइंग इन्फरेंसेस तापरे तमरो वेरिफिकेशन सिंपली आकु लिखिबो एक्सप्लेन करिया को चाहिले तम माने 1 to 2 वर्ड्स रे एक्सप्लेन कर परिबो एटा गोटे इजी हबो तमको बेले बेले इंडक्टिव अप्रोच आउ डिडक्टिव अप्रोच भितर डिफरेंशिएशन पड़े तो तुमको इजी हम गोटे जिनस मन रखीदे अपोजिट करके आ गोटे जिनस लिखि पार तापर तुम हूँ टीचर सेंटर्ड मेथड माने जो को मेथड मु तुमको कौन कहती को प्रकार मेथड को प्रकार अप्रोच रे तुम माने स्टूडेंट को पढ़ेबो आमे अप्रोचेस तो देखिले गोटे हूँ इंडक्टिव अप्रोचेस देखिले गोटे हूँ डिडक्टिव अप्रोचेस देखिले एबे आमे देखिबा मेथड्स फास्ट मेथड्स हूँ तुम मु तो तुमको बायोलॉजिकल साइंस रो पेपर रे एगुडा को बहुत भल से पढ़ेछि बट जो पिला मानकर फिजिकल साइंस थिबो आ मैथमेटिक्स थिबो बायोलॉजिकल साइंस नथिबो तो सेई पिला माननकु आउ थरे मु बुझेई दउची जे टीचर सेंटर्ड मेथड कौन ना जो मेथड रे गोटे टीचर को बेसी कंफर्टेबली पढ़ेबा को इजी हुए गोटे टीचर सब टीचर केमती भल से पढ़ेबो सेटा होची टीचर सेंटर माने लेक्चर मेथड केमिति गोटे टीचर लेक्चर तम हैला स्टूडेंट सेंटर्ड हेले स्टूडेंट केमती बुझिबो बुझेला कि नै तो लेक्चर मेथड दिस मेथड हैज बीन यूज्ड इन एजुकेशन फ्रॉम एंशिएंट डे ये जो टीचर सेंटर्ड मेथडटा आम एंशिएंट डे रु चली आछि ठीक अछि at present also this method has occupied an important place in Indian school आम इंडियन स्कूल ले ये मेथडटा एबे भी गोटे पर्टिकुलर स्थान अधिकृत करिछि
It is also called telling method. Obviously lecture method ମାନେ teacher ପାଠ ପଢ଼େଇବ. Telling method. Why? Because the teacher in it teaches through feeling. ହେଲା. It depends upon two factor. गोटे होची subject को select करिबा ହେଲା. आउ गोटे ହେଲା subject को present करिबा. First दीटा जिनस को नै teacher centered learning तमरो मेथड लर्निंग मेथड बेस्ड करथाए बा लेक्चर मेथड बेस्ड करथाए कौन कौन ना गोटे होची तमरो सब्जेक्ट मैटर कौन हबो सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करिबा आउ गोटे होची तमरो कौन ना तमरो केमिति से सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करबा व्हेन टू यूज लेक्चर मेथड केतेबेले लेक्चर मेथड यूज कराबे टू मोटिवेट टू समराइज टू क्लैरिफाई to save time, to present additional material, to give assignments. ये सब होची तमरो कोन लेक्चर मेथड रे यूज होथिबा प्रोसेस मोटिवेट करिबा समराइज करिबा क्लैरिफाई करिबा टाइम सेव करिबा प्रेजेंट करिबा आउ असाइनमेंट दबा एडवांटेजेस कोन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन टाइम सेविंग तो होता है आउ इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअलाइज हो जाए गोटे प्रकार इंस्ट्रक्शन हो जाए डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इट सेव टाइम तो मुझे कहती इट मेक सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव इट इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन अमंग पीपल्स टीचर प्रोनाउंस करने द्वारा गोटे वर्ड गोटे स्टूडेंट भी प्रोनाउंस करें बट लिमिटेशन कौन प्यूपिल एठी छुआ मानकर किछि कौन रहिलानी पार्टिसिपेशन रहिलानी से माने एठी पैसिव लिसनर हे गले थियोरिटिकल नॉलेज को बेसी एम्फासाइजेस दिया जाए एठी बेसी थियोरिटिकल नॉलेज को एम्फासाइजेस दिया गला ना किछि एक्सपेरिमेंटल हेलानी छुआ माने लर्निंग बाय डूइंग कले नाही इट इज वन साइडेड अनस्टेबल नॉलेज लिमिटेड टाइम हैला तापरे नेक्स्ट होची लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पाठ पढ़ेबा सहित एग्जाम्पल सहित छुआ मानकु बुझेबा बा देखैबा एटा होची तमरा लेक्चर कम LCD मेथड जोड़ा तुमको कहा जाए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिस मेथड इंक्लूड्स द मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दैट एटी टीचर कौन करे ना खाली पढ़ाए ना ताकू प्रैक्टिकल करके भी देखाए द टीचर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द क्लास एंड डज ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट ही डज से बुझाए जे से कौन करुची से कौन कहूची तो केमिति एटा से धर कहि दउची कि रेड लिटमस पेपरटा बेसिक रे ब्लू हो जाउची ब्लू लिटमस पेपरटा एसिड रे रेड हो जाउची बट तुम एटा सुनिल बट जितेबाला गोटे टीचर ताको एक सतरे लिटमस पेपर आनिब सतरे एसिड आउ बेस आनिब आउ सतरे एक्सपेरिमेंट करी देखैब तो सेठी गोटे छुआर नॉलेजटा कंक्रीट हो जिवो गोटे छुआर नॉलेजटा कोन हो जिवो भल से सेतिरे आसी जिवो आउ सेटा से केबे लाइफ रे भूलिबो नाही The student see the actual apparatus operation and help the teach and demonstrate and से माने कौन करती छुआ द्वारा रियल जिनस सहित देखा सहित पाठ पढ़ती student observe the demonstration critically and try to draw inferences thus their power of observation and reasoning also कौन हुए एक्सरसाइज खाली तांको मुंड काम कान काम करेनी तांकर होल सबू ब्रेन काम करे केमिति होउची केमिति आमे घरे जे एटा ट्राई करबा कि आमे एटा करबा कि केमिति हेची कोन होउची से इजीली सेटा को ग्राफ करी पारंती मेरिट्स कोन the psychological method that is proceed from concrete to abstract hela it is an economical method it is time saving method students are engaged in various activity like observing taking notes answering etc hela छुआ माने एठी इन्वॉल्व हेले देखिबारे केमिति होउची ताकू ऑब्जर्व करिबारे ताकू लेखिबारे जहा देखिले ताकू लेखिबारे आउ आंसर दबारे suitable for all students bring together their theory and practice but तार demerits कौन रहिला
प्रोवाइड नो स्कोप फॉर लर्निंग बाय डूइंग। गांधीजी आमको जहाँ कही जे पाठ पढ़ा सहित करवा हेले आमर सेटा कौन हो नॉलेजटा abstract बनीजिवो बट एठी सेटा हो नाही। स्टूडेंट आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। एठी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कले नहीं, टीचर करके देखैला बट स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कले कि it is not suitable to develop scientific attitude, research attitude student मानक भितरे develop करई पारे नहीं, सेतिकी अनुसार develop करई पारे नहीं। it does not give training in laboratory skills to the student मानकर laboratory skill development हुए नहीं, कारण टीचर ही कला, टीचर ही बुझेला, छुआ माने खाली देखिले ताकू ड्रॉ कले, ताकू ऑब्जर्व कले, आउ टीचर जहाँ क्वेश्चन पचारा तुमको आंसर देले, बट ये स्टूडेंट निजे इनवॉल्व हेले नाही। तापर है तुमर स्टेप इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। कौन कौन स्टेप रहा? प्लानिंग, प्रिपरेशन, सब्जेक्ट मैटर, लेसन प्लानिंग, reversal of the experiment, collect and arrangement of the apparatus, introducing a lesson, presentation of subject matter, preference of experiment and chalkboard work। then next होची तमरो कोन ना historical method। एठी तमे कौन पढ़िबो ना, इन दिस मेथड द टॉपिक इज डेवलप्ड फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग एंड कैरिड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। साइंस हैज इट्स ओन हिस्ट्री एंड एवरी इन्वेंशन और डिस्कवरी हैज इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एठी साइंस रो तार ओन हिस्ट्री अच्छी, आउ एवरी इन्वेंशन न किछि गोटे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छी। The children feel very much interested in listening the stories। जेहेतु सबूर किछि ना किछि स्टोरी अच्छी तो छुआ माने एठी very interestingly जिनसटा को पढ़ंती। The teacher is to teach principle of Archimedes। Similarly, while teaching Newton's law, petrol engine, steam engine, telescope, radio, hundreds of modern inventions and discoveries, the teacher can give an historical sketch of each। This will arouse interest in the student for learning scientist। it is suitable for primary classes। एठी कौन हुए ना हिस्टोरिकल मेथड रे कौन ना आमे जो सब नुआ नुआ इन्वेंशन विषय कहूचे किए इन्वेंट करथिले, से जदि से जो साइंटिस्ट मानक विषय टिके कहबा तांको छवि टिके देखेबा तो छुआ माननको सेटा बेसी इंटरेस्टिंग लागिबो। आ बेसिकली प्राइमरी क्लासेस रो छुआ माननको एटा टिके बेसी इंटरेस्टिंग लागिबो। देन नेक्स्ट होची तमरो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। एथिरे तमरो फास्ट होची ह्यूरिस्टिक मेथड। द टर्म ह्यूरिस्टिक हैज इट्स ओन ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को व्हिच मीन्स टू फाइंड आउट। ठीक अच्छे, ह्यूरिस्को रो मीनिंग होची कोन? फाइंड आउट। इन दिस मेथड द स्टूडेंट लर्न बाय एक्सप्लोरिंग। छुआ एठी पढ़ती एक्सप्लोरिंग माने निजे सर्च करबा द्वारा। द टीचर्स रोल इज दैट द पाथ सेटल हु कौन करे ना छुआंकर प्रॉपर टाइम रे प्रॉपर फॉल्ट को रेक्टिफाई करे। डेफिनेशन, चिल्ड्रेन शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड इंड्यूस्ड टू डिस्कवर एज मच एज। एटी छुआ मानकू कहबा को एते माने फैसिलिटीज दिया जाए नहीं, डिस्कवरी करबा को बेसी फैसिलिटीज दिया जाए। एटा किए कहितिले ना हार्बर्ट स्पेंस कहितिले। प्रोसीजर कौन ना ए प्रोब्लेम इज असाइन टू द क्लास। गोटे छुआ को गोटे माने गोटे क्लास को टोटाल गोटे प्रोब्लेम दिया जाए एंड ईच स्टूडेंट इज मेड टू फील रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट समथिंग फॉर हिमसेल्फ। सबू स्टूडेंट मानक कह जाए तमें इस प्रोब्लेम को सॉल्व कर डिफरेंट डिफरेंट वे बाहर कर। Each student try to acquire information about the problem from different source। से माने कौन करती डिफरेंट डिफरेंट सोर्स रू से मानकर इनफॉरमेशन कलेक्ट करती कौन करबा पाई ए प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पाई। देन एक्सपेरिमेंट करिवे, तापरे डाटा कलेक्ट करिवे, लॉज आउ जनरलाइज करिवे। एटी गोटे टीचर रोल होची द टीचर शुड बी वेल प्रिपेयर
वेल इक्विप्ड टीचर पाखरे प्रॉपर इक्विपमेंट थिबा दरकार आ भलसे गोटे टीचर प्रिपेयर होइथिबा दरकार। एठी गोटे टीचर गोटे गाइड हिसाब रे काम करिवो, गोटे फ्रेंड हिसाब रे काम करिवो, आउ कौन करिवो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दबो केम गोटे स्टूडेंट को एनकरेज करिवो, तांको भितरे साइंटिफिक एटीट्यूड रो डेवलपमेंट करिवो, आउ कौन करिवो आउ छुआ को भाबिबार कंप्लीट फ्रीडम दबो। ठीक अछि। देन होस तमरो प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड वाज डेवलप्ड बाय Kilpatrick and perfected by Stevenson, which objective of bringing life in school. Project method a plan of action. Kilpatrick कौन कहले a project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment. Stevenson कहले a project is a problematic act carried to completion in its nature setting. Steps involved in the project method. कौन प्रोजेक्ट मेथड रे स्टेप इनवॉल्व थाए गोटे सिचुएशन टू पर्पोज ए प्रोब्लेम, चूजिंग अनाउंसिंग अ टॉपिक, तापरे प्लानिंग करिवो, से प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिवो, तापरे ग्रेजुएशन करिवो, तापरे रिकॉर्डिंग करिवो। रोल ऑफ ए टीचर। ए प्रोजेक्ट मेथड रे गोटे टीचर रो रोल कौन? प्रोजेक्ट तो फर्स्ट कथा टीचर शुड प्रोवाइड वर्क टू एवरी चिल्ड्रेन, फर्स्ट कथा तार सेटा हो। देन he should also aim at inoculating scientific attitude, student भितर scientific attitude रो inoculation करिवो। त मन देखिथिबो सब स्कूल ले सब प्रोजेक्ट देखा दिया जाए पूरा। आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल टू आरंभ करी जेते इंटरनेशनल स्कूल होची से माने स्टैंडर्ड 1 रु कोन प्री नर्सरी नर्सरी छुआ मानन को प्रोजेक्ट दवा स्टार्ट करछन। छुआ मन तो करना दे, छुआ मानकर बापा माँ मानकर ब्रेन नो डेवलपमेंट होची, से मानन भीतर साइंटिफिक एटीट्यूड आछि एज कंपेयर टू चिल्ड्रंस। तो या द्वारा कौन होची गोटे क्रिएटिविटी गोटे साइंटिफिक एटीट्यूड रो डेवलपमेंट हे परिबो। ठीक अछि। तापरे साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 3 नंबर हाउस तमरा साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड आर टू कोऑर्डिनेशनल एम्स फॉर टीचिंग साइंस हैला। The method or procedure which the scientist use in the pursuit of science may be termed as scientific method. हैला। Problem solving may be defined as planned attack upon a difficulty for the purpose of finding a satisfactory solution. किया को कहितले टीएम रे कहितले। प्रिंसिपल कौन ना प्यूपिल्स मस्ट फील द प्रोब्लेम एज देयर ओन। एठी कौन करिवे छुआ से प्रोब्लेम टाको निजर ओन बोली भाबिबे, निज प्रोब्लेम बोली भाबिबे। प्रोब्लेम शुड बी स्टार्टेड डेफिनेटली, सॉल्यूशन मस्ट बी डेफिनाइट एंड क्लियर। स्टेट कौन प्रोब्लेम को सेंस करिवो, प्रोब्लेम को डिफाइन करिवो, एनालाइज करिवो, डाटा कलेक्ट करिवो, इंटरप्रिटेशन करिवो, फॉर्मुलेशन करिवो, सिलेक्ट करिवो, टेस्ट करिवो, ड्रॉ करिवो कंक्लूजन, जनरलाइजेशन करिवो, तापर तार एप्लीकेशन हैला सेरा को अप्लाई करिवो न्यू सिचुएशन। ठीक अछि। तापर हैला लैबोरेटरी मेथड। ए मेथड रे कोन हुए गोटे छुआ को करिबा को दिया जाए एक्सपेरिमेंट। ठीक अछि। It is an important method of teaching science. It is based on learning by doing. तो मुझे कहती ना छुआ मानन को एतरे करिबा को दिया जाए जिनस। Elaboration instructions provides training in practical skills, develop critical thinking and create interest in science. Advantages कौन? Based on learning by doing and develop scientific attitude. It is a learner centered approach. सेटा सब टीचर centered approach थिला, टीचर सब करथिला, but it is a learner centered approach. Develop manipulative skill, give training in problem solving, develop self confidence and spirit, provide opportunity for critical
थिंकिंग ए सब जिनस को तुम मानू वन बाय वन लिखा पड़ो एडवांटेजेस रे लिमिटेशन रे कौन ना यहाँ हूँ एक्सपेंसिव मेथड कारण आमर केमिकल्स दरकार हम इंस्ट्रूमेंट्स दरकार हम इक्विपमेंट्स दरकार हम लाइट दरकार हम वाटर दरकार हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने डिफरेंट डिफरेंट टाइप केमिकल्स जोटा कि वेरी एक्सपेंसिव होता है आउ इट्स टाइम कंज्यूमिंग क्रिएटिव टीचिंग ऊपर भी डिपेंड करे ठीक अच्छे it is not guarantee that the student will learn to solve problem तापर होची मॉडर्न टीचिंग मेथड एमटीटी मॉडर्न टीचिंग मेथड रे फास्ट आसीबो तमरो ब्रेन स्ट्रॉमिंग जोटा कि एबे होउची एबे सब जो टीचिंग मेथड रे फास्ट तमरो ब्रेन स्ट्रॉमिंग रहउची टीम टीचिंग रहउची मॉडल्स रहउची हला एवडा सब रहउची brainstorming कौन this can be defined as problem solving technique in which all the members of the group provide spontaneous contribution it is a form of discussion which enable collective creative thinking in this form of discussion the brains of the participants are stimulated to create a stream of idea to give suggestions regarding the टॉपिक बुझेला गोटे टॉपिक दिया होता है से टॉपिक ऊपर तुमर ओपिनियन मगा जाए जो जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है है सेटा हूँ ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड तापर हूँ टीम टीचिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम टीम टीचिंग is based on the assumption that no single teacher possesses expertise to डू फुल जस्टिस टू द एंटायर कोर्स ये कौन हुए गोटे गोटे टीचर को गोटे एंटायर कोर्स को पढ़ाया को दिया जाए ना समस्त को अधा अधा कर बांटिकी दि जाए इट इनवॉल्व्स टीम वर्क बिटवीन टू और मोर टीचर हु टुगेदर मेक प्रेजेंटेशन टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एटी दी तीन टा टीचर गोटे मेन गोटे कोर्स को पढ़ाती हाफ हाफ करिके और डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन बने मॉडल्स ऑफ टीचिंग A model is a pattern or a plan which can be taken up to shape a curriculum or course to select instructional method to guide teachers' action. Models of teaching has been developed to help a teacher to improve their competency to reach more children and create richer and more diverse गोटे टीचर कौन कर से जहाँ पढ़ेब तार गोटे मॉडल बा तार गोटे स्कीमेटिक डायग्राम करके आनिब सो दैट गोटे टीचर कौन जानी भी माने तार आइडिया भी एनहांस है प्लस से सबू स्टूडेंट मान को बुझे पारा भाया सी कैपेबल हो गला तापर हूँ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है इट इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी दैट यूजेस ए स्ट्रक्चर इंक्वायरी प्रोसेस It is based on the work of Jerome Brunner. In the concept attainment, students figure out the attribute of group or categories that has already been formed by the teacher. Concept attainment is the search for an identification of attribute that can be distinguished examples of a given group or category from non-example. तापर है तुम माइक्रो टीचिंग मेथड मु तुमको बहुत भल से बुझे ये मेथडटा कौन ना गोटे टीचर को गोटे छोट सब्जेक्ट दि जाए है छोट टॉपिक दि जाए सी कौन करे ना अदर टीचर ट्रेनी मान आगे से टॉपिक को एक्सप्लेन करे खाली एक्सप्लेन करेनि से एक्सप्लेन करे आउ से फीडबैक को नहीं जे से कौन पढ़ेला आउ कौन पढ़ी था कौन तार भूल रहा से फीडबैक नहीं कि से पुणी रिप्लान करे पुणी रिप्लान करे पुणी आउथरे से टॉपिक को से आगे रिप्रेजेंट करे है यहाँ हूँ गोटे माइक्रो टीचिंग मेथड ए मेथड द्वारा से तार नॉलेज को कंक्रीट करि पारे आउ तार स्टूडेंट को पढ़ेबार जो स्किल रो डेवलपमेंट हो पारे द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज ओरिजिनेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 बाय वेट एलन In India, micro-teaching was introduced by D.D. Tiwari in 1967 at CPI, Allahabad. ये Allahabad एटा बड़ हम ये Allahabad रे एटा बड़
Micro teaching is a effective technique used for the development of skill in teacher. Also scale down teaching approach feature कौन एथरे रहिला. It is a real teaching but focus on developing teaching skill. It is a training device ହେଲା एटा जोटा training device to prepare a effective teacher. तमु जहा कहली एटा सेटा एक्सप्लेन हेची. It is a highly individualized training device to reduce the complexities in classroom teaching, identify the defect fault in student, teacher and give teaching feedback to bring behavioral changes in teacher. Principle of enforcement, principle of practice and drill, principle of continuity, principle of microscopic supervision. देखो मु तुमको कहितली प्लानिंग करिब, टीचिंग दब, डिस्कशन नब, फीडबैक नब, रिप्लान करिब, रिप्लान करिकरी रीटीच करिब, रीफीडबैक नब, पुणी प्लानिंग करिब. दिस इज अ माइक्रो टीचिंग साइकिल. सरला तमर 4th यूनिट कंप्लीट हो गला. नेक्स्ट क्लास रे हम माने 5th यूनिट पढ़िबा. धन्यवाद पिला माने. आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे, क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे. जहाँ भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणाई परिबे. जहाँ भी आपण को डाउट रहिला, जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछन्ती, स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे, आपण सेठु परचेस करि परिबे. आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हो जाइछि. जो माने भी जेकोसी पिला इंटरेस्टेड अछन्ती आपण हमको कांटेक्ट करी जणाई परिबे. मो स्टार्टिंग रो भी पिला कहिछि आपण एडमिशन करंतु न करंतु, डिटेल्स बुझंतु, ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार, आपनकर जो कोर्स भी आपनको एजेंट किबा कौन से इंस्टीट्यूट कहूची सेथिरे कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो, कौन कौन एक्स्ट्रा आपनको माने आपनको एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नहीं जाई परिबे. तो आपण हमखे करंतु कि न करंतु, डिटेल्स फोन करके बुझंतु, जहा द्वारा आपण आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे. तो धन्यवाद पिला माने. जय जगन्नाथ.